So hi everyone, say hi. Hi guys, So this is Rosie and this is my friend. PM Mania. So which is very हाम्रो उ त एकदमै पपुलर छ न्युजिल्यान्डमा उसको भिडियो उसको युट्युबमा गएर हेर्नु होला BM Mania ब्लग. So welcome to रोजीको ब्लग अहिलेलाई चाहिँ. So today I got a special friends on my video. So उहाँले चाहिँ हजुरलाई आज उहाँको होल एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ. ऊ पनि 5 वर्ष अगाडि म जस्तै आएको छ अनि उसको त अहिले आइएम सो ह्याप्पी. अब उसको जर्नी चाहिँ पहिला हामी सँगै काम गर्थ्यौँ नि त हस्पिटलमा. अहिले चाहिँ हामी दुईजनाले हाम्रो गोल चाहिँ यस्तो मिट गरेको छौँ नि. We are so blessed, right? Yeah. We have the same lifestyle. That's true, yeah. Because first of all, congratulations for getting your house, Thank you. and that's a big achievement. I did. So yeah, welcome to my blog. So today, आज चाहिँ हामीले मैले चाहिँ उसलाई अब हजुरले कमेन्ट गर्नुभएको छ नि त न्युजिल्यान्डमा कस्तो छ के छ भनेर. सो उसलाई चाहिँ सोध्छु. So he's from India. So what are we gonna talk? हाम्रो नेपाली audience they do understand. They do understand Hindi, but I didn't understand anything in Nepali, so try to ask me the question in Hindi so I can explain, or Hindi or English, whatever language you want. Maybe my Hindi is not good. यदि हजुर न्युजिल्यान्ड आउनु भने चाहिँ हिन्दी मोस्टली युज हुन्छ. यहाँ चाहिँ धेरै इन्डियन्सहरू पनि हुन्छ है. It's second language. Hindi. So yeah, let's talk. अब चाहिँ लेट नगरिकन. So yeah, what made you to come New Zealand? First question. See, obviously, if you want progress in your life, you need to move. So I was thinking to move to USA. Obviously, couldn't get the visa, so I tried Canada. Obviously, couldn't get the visa, and English was not really good, so I got only 6 band in my IELTS, and 6 band was expected by NZ only. So I just came here, unfortunately, but it's fortune now. So at that time, like मेरो पनि ड्रिम थियो like Canada अनि or like America, Australia. We were very immature. We only think about America, Australia. We don't think about our career. But now, whatever happened, it happened for the best reason. That's true. So you are well settled over here, and then if for example, like if you have been to Canada, America, so do you see yourself the position you are starting? No, definitely. I was really blessed that I come to New Zealand. If you go to Canada and USA, I don't think so. There is a really good career for you. Trump nowadays, he is trying to send everyone out of the USA. Canada doesn't have any jobs, and New Zealand, oh my God, it's a really beautiful country and really good job opportunities. Yeah. And the life is so peaceful. I don't know, like even I'm sitting here, I can feel all the phrase, like That's true. very energetic. After I came to New Zealand, I never get a single headache. Every single problem That's is true. solved because the climate, weather is so like lovely. That's true. यस्तो राम्रो छ कि मान्छेले छि न्युजिल्यान्ड भन्छ तर हजुरहरू आउनु भएको छैन नि एकचोटि आइसकेपछि त यु गोना फल इन लभ. That's true. Like that's I'm very privileged to live my life over here, and then the lifestyle is so cool. Yeah, 100%. Yeah. So are you 100% happy? Certainly, yes. So there are a lot of Nepali students who would like to come to New Zealand for their career. What would you like to suggest them? I would highly like to recommend you if you are coming here for PR. अगर आपका गोल रेजिडेंसी का है, please make sure कि whatever course you are आप choosing. हिंदी में बोल सकते हो. हिंदी में बोलो because हम नेपाली speak हिंदी too. हाँ, अगर ओके जितने भी नेपाली यहाँ पे आना चाहते हैं उसको मैं हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जो भी कोर्स चूज करने वाले हो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि उस कोर्स में आपको PR मिल जाए और उसके लिए ग्रीन लिस्ट जो है उसको चेक करना. होपफुली यू मेड अ वीडियो ऑन ग्रीन लिस्ट. दैट्स रियली ब्यूटीफुल थिंग. सो मेक श्योर यू गो विथ अ ग्रीन लिस्ट. दैट्स हाई प्रायोरिटी फॉर PR. हाँ like क्या होती है कि न्यूजीलैंड वीजा if you get a visa your whole life will change after coming. So जब लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड में लाइफ नहीं है, करियर नहीं है, जॉब नहीं है, what you say? Oh my God, that's totally rubbish thing. If there is no jobs, how country gonna survive? We have jobs, but we do not have much talent that we need. Qualified people, skilled people we need here, right? And everybody want to get job in the bed. Yeah, it's not gonna happen, right? So, see, if you are looking for a job in McD or Peta Pit or any burger shop, it's not gonna happen. If you have a good skill, experience, qualification, please come here. New Zealand really need people like skilled one, like especially like her. She is nurse, and New Zealand really need a nurse. So yeah, if you have degrees like that, please come here. Yeah, and then a lot of people like they're telling like what I would like to ask you. So, what is the best thing you love about New Zealand? Oh, beauty. New Zealand की जो natural beauty जो है ना, pure oxygen है, no pollution है, no crowd. No crowd, and then very peaceful and safe. Like yeah, it is safe. Like, and then like if I'm gonna text you, I'm gonna kill you. Then
thought the police will come tonight. So it's how much say because It is, yes. in New Zealand ma चाहिँ मैले उसलाई threaten गर्न मिल्दैन. I mean, I can't threaten you. Like no, I'm you gonna can't. kill you. Even I say in a joke that what you will take seriously and you'll be like, hey, he's gonna kill me. So the police will come and arrest you. So it's very very safe. It is very safe. I used to drive Uber. Yes, Dubai. रात को 2 बजे मैं टैक्सी चला रहा हूँ, हाँ. लड़कियाँ ऐसे ही घूम रही है, हाँ. कोई टेंशन ही नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ हियर. और आपने तो घर ले लिया 5 साल में. अब न्यूजीलैंड आया ना, you came to New Zealand. हाँ. And with your education loan, we all came from a middle class family. So can you please tell me a little bit how do you able to do it? Like I think you put lot of people where you are today. So why did you buy a house? The people say business. Why house, not business? Oh, why I bought a house? Why not business? Not a business, My audience okay. is asking me why didn't you buy the business? Why house? Tell me your See, experience. I think buying the house is another business, Yeah. because when you buy the house, every year the price of the house will increase. Yeah. You know, so every year you will getting $50,000 to $60,000 extra Mm. top of your job. Yeah. So if you are earning already $70,000 New Zealand dollars, you are earning some much money from the house as well. So it's a business as well. So what I feel, you know, if you buy a business, it can go down it, and like COVID happened. Exactly. Yeah. So in New Zealand, another things, I used to live in a rented house. They will kick you at any time. They Oh, don't yes, care. yes, So yes. to get a rented house in New Zealand, you need to wait for 6 months, 3 to 6 That's months. So if you have a house, You have peace of mind. peace of mind. We are making a video now. Yeah. If we have a rented house, we can't do this. Yeah. So if you have your own house, you can do this. It's peace of mind. So how do definitely. you manage to get a house? Like how do you save money? I know Oh, you work I- hard. I do really appreciate that the way you Yeah, came we so used far to. I used to work 70, 80, 90 hours per week. per week. Yeah. Are you sure? Yeah. Yes. Because day shift and night shift. So I used to do the sleepovers. So I do 40 hours in a daytime. Yeah. And I do the sleepover as well. So 7 to 7 is a sleepover. So 12 hours you get from there. Ah, You just go there and sleep, and you don't need to do anything. yes. So and you still get the money. You So- work in a smart way and you work in a Exactly. very hard way. So Yeah. you managed both. Yeah, everything. Yeah. So because in those hours you can hang out with your family, you can chill, have beer, but your main priority was to reach to the goal. That's true. So- I mean, we don't used to have weekend off Yeah. when our goal was to buy But a now house. you're and- having all the off. So yeah. you're right next to me. It's Tuesday today, but we have a day off. See. So all the Nepali students, I just wanted to talk about the dependent visa. Is it a good idea to come Yeah. on the dependent visa? Is there any great future? It's depend on your qualification and your experience and everything. I mostly tell people कि आप अपनी जो वाइफ है उसको बोलो कि वो किसी भी वीजा पे आ जाए, हाँ. उसके डिपेंडेंट पे लड़का आएगा, तो लड़का जो आएगा उसको ओपन वर्क वीजा मिलेगा. हाँ. ओपन वर्क वीजा पे आप जितना चाहो काम कर सकते हो. हाँ. तो लड़का उबर भी कर सकता है, लड़का कहीं खेतों में भी काम कर सकता है, लड़का सिक्योरिटी की भी जॉब कर सकता है. लाइक स्टार्टिंग में जब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यू हैव एजुकेशन लोन एज वेल, यू नीड टू पे दैट, राइट. तो लड़की जो आएगी वो थोड़ा छोटा काम करेगी, घर का भी ख्याल रखेगी, बच्चा है तो बच्चे का ख्याल रखेगी, और लड़का जो है फ्री है, चाहे इतना काम कर सकता है. यू कैन मेक मोर मनी ऑन दैट. Yeah, that's right. So अब स्टूडेंट तो अब यहाँ आएंगे. So आपको what is the famous job you can get in New Zealand? What should you apply? फेमस जॉब के बारे में अगर बात करें तो अभी तो हेल्थ केयर बहुत बढ़िया चल रहा है. Like first में तो you cannot get a house here. You need to start from the base, like भाड़ा Oh, भी from होना. basic. So what do you say? Because you don't expect the high. You need Yeah. to go from the lows, right? That's okay. what you did. Yeah, exactly. So tell them like, hi guys, like don't get stressed. You'll get the job. I mean, So in the case of jobs, you don't need to worry, because obviously it's hard time. But one day you go to the street, find to the restaurant, give them your CV. Go to the supermarket, give them your CV. Go to any other Foursquare or other shops, give them CV, and this is how you'll find your first job. how much the average people make money in New Zealand? Because everybody loves money. Let's talk about the money. So yeah, money. That's a good question. That's really Yeah, how good. much they earn? Like the people say, oh, there is no money in New Zealand, but I see No, everywhere no. there is a dollar. You just need to pick it out. That's What do you true. say? So on a student visa, Yeah. on an average, Yeah. you can get minimum wages, that's for sure, and you can work for 20 hours as So what well. is the minimum average now? Minimum wages is $23. 23 point something. Something, yeah, and it's gonna increase. Like, every year it get increased by $1, so it's Yeah. gonna be 24 point something now. So 5 years ago it was $16, $16.50. I think 17, 18 when you were here.
When I started at 16, 15. Yeah, that's how it goes because the living expenses is going up, everything is going up, and our salary is going up. Yeah, So so how much? आपने अब हिंदी में बोला कितने लाख लाख? और how much- नेपाली रुपए का मुझे पता नहीं है मैं ना। नेट कन्वर्ट करके मैं बताऊंगी। आप हिंदी में बताओ। एक नेपाली रुपए 10 कितने का रुपए होता है? 10 rupees 10 equal to rupees. 1 Indian rupees. 10 रुपीज 16 होती है नेपाल की। Yeah. क्या? यहाँ आपका इंडिया की 10 रुपीज नेपाल की 16 होती है। I mean, So, our 1 rupees equal to Nepali 10. No. So? 1 New Zealand dollar is equal to how many Nepal? Oh. 500. No, 80 to 83. All the people, how much money? I just calculate it and I'll tell you. Yeah. Just say like 82 multiplied by 20. Oh, sorry. yeah, don't get serious. Come on, you can do it. Okay. So in the case of earning, I think the Nepalese rupees is 82 versus 82. New Zealand, right? तो अगर आप 1 घंटा भी न्यूजीलैंड में काम करते हो तो 1 घंटे का आप नियरली 1800 नेपालीस 1800-1900 और नेपालीस period- कमा सकते हो। तो तो बेसिक हो गया पीरियड में भी होता है ना लाइक हाँ, 2500 अगर- 2600 ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। क्या होता है कि like नेपाल में आई कन्वर्टेड इफ यू रियली वर्क हार्ड आप 6-7 लाख यू कैन अर्न बट यू शुड नो हाउ टू सेव द मनी Okay. 6-7 lakh you can earn it. I have seen the people In who are- Nepalese yeah, here. yeah. Okay. Like I mean, I don't know how to convert it in Hindi. Yeah. But there is a lot of there is a great opportunities. हम्म। Like basic तो मैं salary. यही is बोलता हूँ ना getting, क्योंकि एक वीकली आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो 40,000 कमा सकते हाँ। हो, तो मंथली आपका 1,60,000 हो गया। अगर आप फुल टाइम करते हो तो ऑब्वियसली 5-6 लाख रुपए कमा ही लेगे, Yeah. है ना? तो मैं यही बोल देता हूँ। Okay. So if you are on a student visa, 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर, so if you are on student visa, नियरली आप 40,000 नेपाली रुपीस कमा लोगे, है ना? Per वीकली, week. पर वीक Yes, for- ऑब्वियसly। In New Zealand, everything is weekly. Everything is weekly. Rent weekly. Yeah, or rent. Salary weekly. या सैलरी सब कुछ वीकली हाँ, होता है। Weekly होती है। तो वीकली आप 40,000 कमा लोगे, महीने का 1 लाख मिनिमम है ना 40 लाख। मिनिमम मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा Student की हूँ। बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर आप फुल टाइम पे Full time हो हो तो तो आप डबल ट्रिपल, तो 1-2 लाख कमा सकते हो 1 वीकली। लाख, हाँ। तो मंथली तो आप 6-7 लाख भी कमा लोगे, है 8 ना? लाख भी if you डिपेंड, do- हाँ, अगर आप पार्टनर इज प्लस पॉइंट यू हाँ। अर्न 8 लाख आई अर्न 16 lakh. हाँ, So- अगर आपका पार्टनर के So साथ this is the big example. If you guys are a couple and wanted to come New Zealand, whoever say there is no money, there is No, it's not. No. There is the money. It's obviously there is the money. Yeah. If you work hard, heaps of money you can earn in. and the life is Nepal. so peaceful and it's not stressful. You can get हाँ, exactly. बॉस बोलता है अगर काम आपसे होता है तो करो, बाद में कर लेना। That's really good. Yeah. So yeah, पैसा तो बहुत है। अगर आप न्यूजीलैंड आने वाले So हो, everybody main destination is to earn money, look after family is the goal. So money speak everything nowadays. Yeah, exactly. Without money there is like money a part of life important होती है. Like or on the other hand और यहाँ का health system भी अच्छा है ना. बहुत बढ़िया है। Because of the weather you never get sick, you never get like headaches, nothing. Yeah. So you can work in a very peaceful environment. बहुत ही बीमार तो बहुत ही कम पड़ते हो यहाँ पर। मैं तो कभी 5-6 साल हुआ, अभी मैं tablet भी I haven't had. डॉक्टर के पास कभी गया ही नहीं मैं। So see the advantage of coming to New Zealand. बहुत बढ़िया है। न्यूजीलैंड इज द बेस्ट And कंट्री। then another thing like before you said you want to go USA, right? Yeah. अभी तो आपका citizen आने वाला है ना. हाँ। So अभी तो he can go everywhere, so you can move on easily, right? Exactly, Plus yeah. point. Yeah. So New Zealand में like if you guys wanted to come New Zealand, यदि हजुरहरू New Zealand आउनु भयो भने base राखेर आउनु होला. So I मतलब didn't understand that. I mean if you want to come to New Zealand, Yeah. just think about the bright future because there is lots of opportunity. You can get to the destination very easily. Exactly. In other countries there are a lot of rules. You keep on like what do you say? सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे न्यूजीलैंड हाँ। पासपोर्ट का ये लगता है कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो और वहाँ के आप पीआर ले सकते हो और वहाँ का पीआर आने के बाद आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ और अगर ऑस्ट्रेलिया गए ना आप हाँ तो हेल्थ केयर असिस्टेंट जो लोग होते हैं 1 घंटे का 60 न्यूजीलैंड डॉलर्स कमाते हैं। हाँ। नियरली तो दोनों सेम ही होता है, तो कितना हुआ अगर 60 1 घंटे का कमाते हो तो नेपाली रुपये कितना So हुआ? क्या होता है कि they earn so much, उनका वही हिसाब से expenses है ना, like we have a different, we barely have. नहीं एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलिया में इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। देखो क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया में जाना थोड़ा मुश्किल है, पीआर वगैरह लेना मुश्किल है, तो मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि आप पहले न्यूजीलैंड आ जाओ, हाँ यहाँ पे आपको पीआर मिल जाएगी, उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी एंड देन यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया इफ यू वांट टू। yeah, if you want to only. मुझे ऑस्ट्रेलिया But- पसंद नहीं है Now we love New Zealand. क्योंकि वो हाँ। बहुत ही हॉट है, वेदर बहुत ही गंदा है, हाँ so I just try to
stay in New So to Zealand. all the aspiring students, we really wanted to come to New Zealand first, Yeah, right? yeah, So, exactly. yeah. New Zealand is the best. Best, and what course you want to suggest them, and which city should they come, like according to your experience? Best course is that you should go with a green list. और दूसरा क्या था क्वेश्चन आपका? पहले से पूछो, पूरा कर देना. So, to all the Nepali students who would like to come New Zealand, which city is the best? They say sometimes Tauranga, Rotorua, Auckland, Christchurch. Which one you suggest? What is the job? Because wherever you go, you need a job in college. Yeah, exactly. So I mean, tell them to be in the safe side. first I would recommend कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर कम्युनिटी अपनी ज्यादा है, जैसे सिख टेम्पल हो गया या फिर हिंदू टेम्पल हो गया. इससे क्या होगा कि अगर आप हिंदू टेम्पल पे जाओगे आपका कनेक्शन बढ़ेगा और कनेक्शन विल गिव यू अ जॉब. आप सोचो कि आपने 100 सीवी भेज दिया 100 जगह पे जाके, तो उसमें से बहुत चांस कम है कि वहां से आपको जॉब मिलेगी. बट अगर आप अपने कम्युनिटी में किसी को बोलते हो ना कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो आपको वहां से जल्दी जॉब मिलेगी. तो जहां पर आपकी कम्युनिटी ज्यादा है वहां पे जाओ, अच्छा रहेगा. दूसरा, जहां पर लिविंग कॉस्टिंग कम है, जैसे रोटोरुआ है, खर्चा आपका बहुत ही कम होता है, तो वो भी एक अच्छा है. ऑकलैंड है तो ऑकलैंड में भी ऐसा ही है, खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिटी है, बट वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. तो इट्स डिपेंड कि आपको जब जल्दी कहाँ पे जॉब मिलेगी. ट्रू. सो मेरे को तो बेस्ट तारोंगा लगती है, कीवी फ्रूट फार्म है ना, आप बताओ ना, लाइक एग्रीकल्चर के बारे में. ये तो हाँ, अगर आई थिंक द बेस्ट वन इज तारोंगा. ये तोरंगा, रोटोरुआ, फेंगरोआ, टीपू की, ये सभी जो है ना वो बे ऑफ प्लेंटी में आता है. और यहाँ पर कीवी फ्रूट फार्म्स बहुत ज्यादा है. तो अगर आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है ना, कीवी फ्रूट में तो जॉब मिल ही जाएगी विदाउट एनी एक्सपीरियंस. विदाउट उसमें कोई Without आपको any एक्सपीरियंस CV वगैरह की cover जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, Just need a phone call. या जस्ट Give गिव फोन Or कॉल. just go in our Instagram, follow us and tell us, oh, we want a job हाँ, in Cleveland. We just दिला need a देंगे. हाँ, जॉब तो मिल जाएगी, कोई जॉब बड़ी मिल बात नहीं है. और उससे भी बढ़िया चीज क्या है पता है, आपको गाड़ी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. आप उसको बोलोगे ना कि मुझे जॉब चाहिए, वो बोले कोई बात नहीं, कल तेरे पास एक लड़का आएगा, उसकी गाड़ी में बैठ जाना, वो तुझे जॉब पे लेके जाएगा और वहां पे छोड़ देगा. तो कीवी फ्रूट तो यार बहुत सही चीज है, जिसको भी That's why I said तारोंगा, रोटोरुआ. हाँ, टोरंगा, रोटोरुआ, टिपू के ये सब बहुत सही है. बहुत सही Yeah, to earn money, but for हाँ. the better future you'll get to know what the best for you. हाँ, वो तो है. अलग अलग अगर आप लंबी सोचते हो तो you need to think more. So we talk all the good things about New Zealand. What is the bad thing about New Zealand? बेड थिंग तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, बट थोड़ा सा क्राइम का इशू है, और वो तो सब जगह पे रहता ही है. और मेडिकल का भी थोड़ा मुझे इशू लगा. हेल्थ केयर इज रियली गुड हियर, बट मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. जब आप ईडी में जाते हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट You में, don't get appointment. तो हाँ, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है. डॉक्टर को फोन करते हो कि मुझे बुखार हो गया है, हाँ. वो कभी हुआ नहीं है, बट वो 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देगा, तो 3 दिन में तो बुखार भी ठीक हो जाएगा हमारा. तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा. तो थोड़ा like बट what- वो नॉट ओनली न्यूजीलैंड, सब जगह पे ऐसा ही है. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, इवन यूके में मेरा एक दोस्त था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी. इट वाज टाइम फॉर द डिलीवरी, शी वाज तड़प रही थी, है ना, फिर भी उसके कोई देखने वाला नहीं था. जो यूके में तो ये हाल है Oh, पूरा. I forgot to ask you one thing. What course did you do in New Zealand and where? Oh, I did the infection risk management. That was useless. course. What was the background in India? I was a laboratory technologist. What does it So, mean? when you go to doctor, they ask you to do blood test, right? Oh, that path lab. Path lab, yes. Laboratory, huh? So I used to collect the blood, put in the machine, and do the reporting kind of things. Oh. So it was nearly connected with the course I did here. So that's why I got the visa easily. So the main thing is that whatever course you are doing in Nepal, Laboratory course like हाँ. lab. हाँ. आपको जो भी चीज आपने नेपाल से की है उसके रिलेटेड कोई भी कोर्स लेके यहाँ पे आ जाओगे तो आपका वीजा रिजेक्शन का चांसेस है वो नियरली 0 जैसा हो जाएगा. हाँ. तो मैंने इसलिए इन्फेक्शन रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स लिया था. एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे लैंड होने के बाद पता चला कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा. अच्छा नहीं हो, like whatever happened it like you are whatever it happened for a good reason. वो क्या हुआ कि कोविड का टाइम चल रहा था एंड कोविड इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन. मैंने इन्फेक्शन रिस्क मैनेजमेंट किया है, मुझे उसमें जॉब ही नहीं मिली. क्या फायदा फिर. तो वो कोर्स तो मैं सबको बोलता हूँ कि मत करो. एजेंट तो आपको कुछ भी दिला देंगे, वो कोर्स को भी करके मत आना. So that's the one.